Good evening, viewers. I'm Abila from Ellen Mishra College of Business Management, Muzaffarpur. In this session, we shall study the topic of software engineering, bug life cycle. It's a part of testing chapter. What is a bug? Bug is an error that are left by the programmers in course of developing the software, particularly in design or in coding. So bug life cycle is also known as defect life cycle, which is a specific set of states that a bug passes through in its entire life cycle. The purpose of the defect life cycle is to easily manifest the bug status changes and make the bug fixing process systematic. Manifestation of defect or bug varies from project to project. The life cycle diagram covers all possible states through which bug passes. Thus, defect life cycle is a cycle which a defect goes through during its total lifetime. It starts when defect bug is found and ends when a defect is closed. The life cycle begins whenever a bug is detected, a bug is noticed or defect is noticed, the life cycle begins. And defect is closed after getting ensured it is not reproduced. It is related to the bug found during testing. A defect is an error or a bug in the application which is created. A programmer, while designing and building the software, can make mistakes or errors. These mistakes or errors mean that there are flaws in the software. These are called defects. अगर हिंदी में इसको समझे तो सिंपल सी बात यह है कि जब प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोग्राम डेवलप करते हैं, पर्टिकुलरली डिज़ाइन फेज में और कोडिंग फेज में, दे मेक मिस्टेक्स, उनसे कुछ गलतियां रह जाती हैं जो आगे चल के जब सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल होगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यूज़र के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो हम टेस्टिंग के दौरान इन बग्स को, एरर्स को ढूंढ के निकालने का कोशिश करते हैं. ओके, तो हम इन्हीं बग्स को रिमूव करने की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिबगिंग. तो बग जब कभी मिला फिर उसको हम कैसे ठीक करते हैं? क्या सारे बग्स को हम ठीक करते हैं? क्या एक बार जो बग हमने रिमूव कर दिया, क्या उसको दोबारा फिर ठीक करना पड़ता है, या फिर दोबारा अपीयर होता है? यही जो डिफरेंट स्टेजेस हैं बग्स के, कब पता चला, फिर वो किसको असाइन हुआ, कोई किसको उसको ठीक करना है, ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ. सो दिस फॉर्म्स a cycle. This goes in a cyclic way. That's why we name it as bug life cycle. Okay. And what is error or mistake or fault? Error is an error is a state that is acquired by an object or any system that is not desirable, that is not expected. यानी हम जो उम्मीद करते हैं अगर उसमें कोई चीज़ वैसा नहीं होता है, देन वी कॉल इट एज एन एरर. समथिंग माइट बी एन एरर फॉर वन, दैट माइट नॉट बी एन एरर फॉर अदर. ओके, समथिंग that is suppose a result is given by the software, that result might be correct for one personnel, and at the same time that result might not be correct for another. So if it is not correct for another one, then it is called an error. And that according to, depending on the user, जो यूज़र को चाहिए उसके हिसाब से अगर वो एरर है तो हमें उसे हटाना होता है. इस हटाने की प्रक्रिया को ही हम डिबगिंग करते हैं और इसी में एक बग लाइफ साइकिल चलता है.
The number of states that a defect goes through varies from organization to organization and also from project to project, as it is governed by the software testing process and depends on several factors like organizational policies, software development model, software development team, which model sorry, which model is being used, like waterfall model, agile methodology, iterative model, component assembly model, okay, project milestones, team structure, project manager, etc. So the bug has different states in its life cycle. The life cycle of the bug can be shown diagrammatically and different states can be shown as follows. So whenever a bug, an error is reported, it is logged. The status of the bug, of the error, is new. It is assigned the status as new. So new means when a new defect is logged, is reported and posted for the first time, then it is assigned a status as new. Assigned means once the bug is posted by the tester, the lead of the tester approves the bug and assigns the bug to the developer team. Means जैसे एक बग रिपोर्ट हुआ, न्यू हुआ, उसके बाद जो टीम लीड है, जो टीम लीडर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, दैट बग इज असाइन टू अ पर्सन फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम. किसी एक आदमी को असाइन कर दिया जाता है कि नाउ यू करेक्ट इट. सो द स्टेटस ऑफ द बग नाउ चेंजेस फ्रॉम न्यू टू असाइंड. ओके, जिस बग का पहले स्टेटस था न्यू, उस समय वो ठीक नहीं हुआ था, अब इसको असाइन कर दिया गया तो उसको क्या मिलेगा? स्टेटस असाइंड. नाउ द ओपन, द डेवलपर स्टार्ट्स एनालाइजिंग एंड वर्क्स ऑन द डिफेक्ट फिक्स. मीन्स when the bug is assigned to a person, the developer, तो क्या करता है डेवलपर? Then he or she starts analyzing the bug and works on it to correct it, to fix it. And when the bug is fixed, means when the developer makes necessary changes in code, changes in design, wherever it is required, and verifies the change, he or she can make the bug status as fixed. So the status of the bug has changed from open to fixed, means it has been corrected. Then retest. After fixing the bug, the developer retests the program, the code, at this stage to check whether the defect is fixed by the developer or not, and changes the status to retest. Now the status fixed is changed to retest. Then the tester retests the bug after it got fixed by the developer. If there is no bug detected in the software, then the bug is fixed and the status assigned is verified. Means कि किसी ने उसको वेरीफाई कर लिया कि ये करेक्ट हो गया. और अगर कोई एरर डिटेक्ट हो गया, इन केस इस वेरिफिकेशन फेज में पता चला, रीटेस्ट में पता चला कि एरर जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, बग पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ, इट इज रीअपियरिंग इन द प्रोग्राम, देन द स्टेटस चेंजेस टू रीओपन. मीन्स इसको फिर से हैंडल करना है, इसको फिर से ठीक करना है. सो इफ द बग परसिस्ट्स even after the developer had fixed the bug, the tester changes the status to reopened. अब उसका status क्या हो जाएगा? Reopened. Once again the bug goes through the life cycle. अभी हम लोग इसको फिगर से डायग्राम से भी समझेंगे. Once again the bug goes through the life cycle that it had previously passed. यानी फिर ये असाइन होगा, फिर उसको फिक्स किया जाएगा, फिर उसको रीटेस्ट किया जाएगा, फिर रीटेस्ट में अगर फिर लगेगा कि इसमें एरर है तो फिर इस पर एक रीओपन का स्टेटस लग जाएगा, और अगर ठीक हो गया तो वेरीफाई करके फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा. एंड फाइनली द क्लोज मीन्स इफ द बग नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, देन टेस्टर असाइंस द स्टेटस क्लोज्ड. मीन्स कि अब जो है इसमें चेंजेस हो गया, बग समाप्त हो गया. एक पर्टिकुलर बग की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बग ठीक हो गया. अगर दूसरा बग होगा तो फिर उसका भी लाइफ साइकिल चलेगा. नाउ द स्टेटस डुप्लीकेट. इफ द डिफेक्ट इज रिपीटेड ट्वाइस
or the defect corresponds to the same concept of the bug, the status is changed to duplicate. यानी एक जैसा दूसरा भी अगर बग रिपोर्ट हो गया तो उस बग पर लिख देगा, उसका स्टेटस लिख देगा कि ये डुप्लीकेट है, मीन्स इसके पहले भी ये बग इस तरह का बग यानी एरर आया था, डिफेक्ट आया था. Rejected. If the developer feels the defect is not a genuine defect, then it changes the defect to rejected. अब उस एरर का, उस बग का स्टेटस क्या हो गया? रिजेक्टेड. उसको लगता है कि जेन्युइन नहीं है, लीगल नहीं है, इसको बहुत छोटा सा माइनर है, इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने जा रही, तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं नहीं चलो ऐसे ही कुछ बोल रहा था, तो वो बग नहीं होगा और उसको रिजेक्टेड स्टेटस मिल जाएगा. डेफर्ड. इफ द प्रेजेंट बग इज नॉट ऑफ अ प्राइम प्रायोरिटी, currently it is not of prime priority, then it is stored, it is kept in mind, it is written, it is documented. Okay, so if the present bug is not of a prime priority and if it is expected to get fixed in the next releases of the software, next release of versions of the software, then status deferred is assigned to such bugs. यानी कुछ ऐसे बग्स होंगे जिनको प्रोग्रामर को, डेवलपर को लगेगा कि इसको अभी ठीक करना नहीं है, इसमें बहुत परेशानी हो जाएगी इसको, और इससे यूज़र को भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने जा रही है, तो उसको क्या करेगा? उसको रख लेगा. यूज़र को ये कह सकता है कि ठीक है आप देखिए ये एरर है, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका जब नेक्स्ट रिलीज हम देंगे आपको, अपडेटेड वर्जन जब देंगे बाद में, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद, तो उसमें इस एरर को हम लोग ठीक कर लेंगे. तो ऐसे बग को, ऐसे एरर्स को क्या स्टेटस देता है? डिफर्ड. ऐसे बग से यूजर को करंटली कोई परेशानी नहीं होने जा रही है, तभी वो उसको साइड कर लिया. अगर परेशानी होगी तब तो उसको ठीक करना होगा. अभी परेशानी नहीं हो रही है, बट फॉर द पर्पस, फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये अगले वर्जन में, अगले रिलीज में उसको करेक्ट करके देगा. फिर एक स्टेटस होता है नॉट अ बग. इफ इट डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, then the status assigned to a bug is not a bug. Means कि यदि उस बग से, उस एरर से, उस डिफेक्ट से कोई किसी फंक्शनैलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, तो फिर उसको एक स्टेटस डाल देता है नॉट ए बग. इसलिए कि फिर कभी जब उसी तरह का एरर लेके कोई आएगा, कोई यूज़र आएगा कि भाई इसको ठीक कर दीजिए, तो देखेगा बग में तो पहले से लिखा हुआ है नॉट अ बग, तो उसको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है. वो कहता है कि भैया ये एरर वेरर नहीं है, ये इसको चलो इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. So this is the bug life cycle. So whenever an error is reported, the status is given as new. Then that bug is assigned to a personnel developer. Then the status changes to assigned. And then the developer starts analyzing and attempting to correct it. Then the status is changed to open. Okay, and when necessary changes have been made in the design or coding, then the status is given as fixed. किसको status मिल रहा है? बग को मिल रहा है. और जब ये फिक्स हो गया, then it is tested, retested. और अगर सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो उसको वेरीफाई कर लिया गया कि ये क्रॉस चेकिंग हो गया कि हाँ भैया ठीक हो गया, then it is closed. That error, that bug has been removed. And if the error persists, bug persists, even if the bug has been removed, and during retesting the bug, another bug related to that bug has generated, has appeared, bug persists, then it is reopened and the bug is assigned to a person. So this continues till the bugs appear, and if the bugs do not appear, then the bug is fixed and the life cycle is closed. Now, at the beginning, when the error is reported and the tester, developers, software engineer finds that this is not a genuine error, in that case it is rejected. There should have been a line here. यहाँ से यहाँ एक लाइन होना चाहिए था न्यू. अगर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड. या फिर उसमें लिख दिया नॉट अ बग, वो बग नहीं है, आप काम करो. और फिर जब उसको ओपन करता है, जब उसको एनालिसिस करता है,
तो एनालिसिस के दौरान अब उसको पता लगता है कि ये बग बहुत सीवियर नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, तो वैसे केस में वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। या फिर उसको लगेगा कि अभी इस चेंज को हम नहीं कर सकते, बहुत मेजर चेंजेस करना होगा कोड में, अभी फिलहाल हम इसको इंस्टॉल करवा देते हैं, यूज़र को इससे कोई समस्या प्रेजेंटली नहीं होने जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, अपने स्टॉक में, अपने स्कोप में उसको रख लेगा एंड द स्टेटस इज गिवन एज डेफर्ड। तो ये क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट वर्जन रिलीज होगा तो उसमें इसको अपडेट कर देगा। और उसी के जैसा पहले कभी कोई एरर आया था, बग आया था, तो उस बग को असाइन कर दिया जाएगा डुप्लीकेट, और इसके अच्छे से एनालिसिस होगी कि जब एक बार पहले बग रिमूव हो गया, देन व्हाई डिड इट अपीयर अगेन, फिर क्यों हुआ। ओके, नाउ दिस लाइफ साइकिल इन मोर डिटेल, सी हियर, टेस्टर फाइंड्स अ डिफेक्ट, the status is given new, development project manager will analyze the defect, if it is a valid defect, no, then the status is rejected, जैसे यहाँ देखा था, वैलिड है नहीं तो नॉट ए बग, रिजेक्ट हो गया। एंड इफ इट इज अ वैलिड डिफेक्ट देन इज इट इन स्कोप, अगर नहीं है तो क्या हो गया, स्टेटस डिफर्ड, और अगर है स्कोप अभी करंट में इसको ठीक करना है अगर, तो इज इट ऑलरेडी रेज्ड, अगर आता है यस, पहले इसका रेज हुआ है इस तरह का बग, तो उसका स्टेटस हो जाएगा डुप्लीकेट, और अगर नो तो यहाँ आ गया डेवलपर स्टार्ट्स फिक्सिंग द कोड, फिक्सिंग शुरू कर देगा, कोड में चेंजेस करना शुरू कर देगा, और स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस। उसके बाद जब ठीक हो गया तो कोड फिक्स्ड और स्टेटस हो जाएगा, कोड फिक्स्ड हो जाएगा। टेस्टर रिलीजेस द कोड, टेस्टर क्या करता है, रीटेस्ट द कोड, फिर टेस्टिंग करता है, अगर टेस्ट में पास हो गया तो स्टेटस क्लोज हो गया, टेस्ट में पास नहीं हुआ यानी बग स्टिल परसिस्ट कर रहा है, तो फिर रीओपन का होगा, और जब रीओपन होगा तो फिर यहाँ से ये यहाँ चला आएगा। सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द बग। सो विद दिस, थैंक यू।